Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will take a look at all that transpired in the two houses of parliament on Tuesday. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Lok Sabha passes the Finance Bill 2025, 35 amendments aimed at tariff rationalization and boosting domestic manufacturing incorporated. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights key changes designed to enhance ease of doing business and support India's economic growth. The Disaster Management Amendment Bill 2024 sees a parliamentary green light. Amendments put forth by Home Minister Amit Shah for some clauses are adopted. Rajya Sabha passes the bill as amended. We are here to stay in power for 15 to 20 years, emphasizes the Home Minister. And Parliament passes the Boilers Bill 2024. Lok Sabha votes for the bill passed by the upper house earlier. Replying to the discussion, Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal alleges the Congress party held on to the bill for 27 years. News now from the Lok Sabha. The Lok Sabha on Tuesday passed the Finance Bill 2025, incorporating 35 government amendments aimed at tariff rationalization and boosting domestic manufacturing. Finance Minister Nirmala Sitharaman, while discussing the bill, highlighted key changes designed to enhance ease of doing business and support India's economic growth. This finance bill, sir, we have attempted to do several things which, as per the expectation and aspiration of the people of India, and also the goal that the Honorable Prime Minister has given us towards a Vikasit Bharat by 2047, which is hardly 22 years from now. So, we have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. The customs rationalization, tariff rationalization, which was an exercise that we began 2 years ago, every year some or the other rationalization related steps have been announced in the budget. Now, this budget, this finance bill in 2025 relating to the customs aims to rationalize tariff structure and to address duty inversion. These will also support manufacturing units, domestic value addition, promote exports, facilitate trade, and also provide relief to the common people. So that has to be highlighted because it's not just the new income tax bill which is coming, but this finance bill itself is talking about rationalization of customs, which is a very big step forward so that importers can benefit from it. Exporting industry which import parts can also become cost competitive. So, Budget 2025, sir, we aim to boost domestic production and enhance export competitiveness by reducing duties on raw materials and inputs, making domestic products more cost effective, as I said a minute ago. So taking forward the comprehensive review of customs, about which I would like to elaborate, the rate structure announced in July 2024 budget, we are taking that forward. So as I said, the exercise began 2 years ago. We made a major announcement in July 2024 budget. We are taking it further in this budget also. So this finance bill actually proposes to remove 7 customs tariff rates for industrial goods. The 2 tranches of rationalization of customs tariff carried out so far have reduced the number of tariff rates from 21 to 8, including the zero-rated goods. Many Indian exporters have become cost competitive.
And one matter which will interest honourable members is when you're looking at cess and surcharge, we made sure that on no one item on the customs duty where it is being imposed, both cess and surcharge would be imposed. We are looking at that, and therefore in this budget, in the finance bill, we have proposed that only one can be applied, and therefore only one cess or surcharge will be applied on any one item. The Lok Sabha on Tuesday passed the Boilers Bill 2024. The bill had been passed by the Rajya Sabha earlier. The bill was moved for discussion and voting by Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal. Replying to the discussion on the bill, the minister stated that the legislation was first introduced in 2007. Emphasizing his party's primary commitment to the country before politics, he asserted that notwithstanding being in the opposition, his party had supported the bill earlier. He also alleged that the Congress party held on to the bill for 27 years. 2007 में कांग्रेस की सरकार वही कानून फिर लाई, तो हम विपक्ष में होने के बावजूद हमने समर्थन किया और उसको पास किया, क्योंकि हम देश हित को प्राथमिकता मानते हैं। हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। हमारे लिए राजनीति कोई साधन नहीं है हर एक चीज को नोक-झोंक करने का, हर एक चीज को अपोज करने का। मुझे खुशी है आज माननीय सौगता रॉय जी ने भी इसका समर्थन किया। मुझे खुशी है प्रेमचंद्र जी ने अपनी बात करके समर्थन किया। लेकिन मैं बताना चाहता था कि कैसे राजनीति ने इस देश का नुकसान किया है, विशेषकर इस प्रकार की राजनीति जो सत्ता में है तो एक सोच है, विपक्ष में है तो हर चीज को अपोज करो, हर चीज में फेक नैरेटिव डालो, हर चीज में गलत फहमियां पैदा करो। अब बॉयलर बिल में भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करो। इस प्रकार की जो छोटी सोच है, उस छोटी सोच को मुझे लगता है आज सुधार करने की आवश्यकता है। ज्यादा उत्तेजित मत होइए। आपके पास इसमें कुछ बोलने को था नहीं, क्योंकि इसमें कुछ आलोचना करने लायक है ही नहीं इस बिल में। ये बिल तो वास्तव में सर्वसम्मति से पास करने वाला बिल है। हमने इस बिल में क्या किया? आज कई सारे माननीय विपक्ष के सांसदों ने ये बात रखी कि आपने थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को क्यों अलाउ किया? आपने थर्ड पार्टी को देने से आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सेफ्टी को, आपने लेबर राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मैं तो हैरान हूं, हमने तो इस बिल में कोई बदलाव नहीं किया है। ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 2007 के कानून में आया। 2007 में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी जिसमें डीएमके और बाकी सब मित्र पक्ष कम्युनिस्ट सब समर्थन करते थे, आपने ही थर्ड पार्टी अलाउ किया था। आज आप अपने आप की आलोचना कर रहे हो, आपकी जानकारी के लिए। The proceedings in the Lok Sabha commenced with the question hour as usual earlier. On Tuesdays, questions related to the Ministries of Agriculture and Farmers Welfare, Commerce and Industry, Cooperation, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Heavy Industries, Home Affairs, Panchayati Raj, Rural Development, Social Justice and Empowerment, Steel and Textiles are scheduled for oral answers in the Lok Sabha. Replying to a query on dues and under the MGNREGS, Minister of State for Rural Development, Dr. Chandrasekhar Pemmasani, said that in case of delay in payment of more than 15 days, a 0.05% interest is paid from the 16th day onwards. He also mentioned that Tamil Nadu has drawn more than 10,000 crore under the scheme, which is more than what Uttar Pradesh has drawn. Sir, actually this NREGA Act was done by the UPA government, sir. According to the Act, please listen to the statistics. Let me answer. Sir, if there is a delay in payment after the 15th day, from day 16th onwards, there is 0.05% interest will be paid. And
According to the Act, if there is a delay, first the state government will pay the delay. Third, the central government will reimburse that money. This is the Act, sir. But as I said, Tamil Nadu has already received 7,300 crores, sir. Earlier also I mentioned, one second. Earlier also, sir, Tamil Nadu has a population of 7 crores, Uttar Pradesh has a population of 20 crores. But Uttar Pradesh draws close to 10,000 crores. Tamil Nadu draws more than 10,000 crores, sir. So there is no question of not giving money, sir. Replying to a question on farmers quitting, leaving agriculture, Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan stated that the Modi government does not discriminate against any state in the country. He further added that the states like West Bengal and Tamil Nadu need to fulfill the necessary compliances and the funds due to these states will be released. माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। तमिलनाडु का मजदूरी का और सामग्री का, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 86,000 करोड़ का प्रावधान है, 85,000 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं और शेष बची राशि की पाई हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। मजदूर को भी पूरी मजदूरी दी जाएगी और सामग्री मद का भी पूरा पैसा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बंगाल के मित्र बात कर रहे थे, यूपीए और एनडीए के सरकार के समय अगर 2006-7 से 13-14 तक पश्चिम बंगाल में केवल 111 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए थे, हमने 239 करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं और 14,985 करोड़ की राशि के विरुद्ध 54,515 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को भी दिए गए हैं। ये कंप्लायंस पूरी कर दे, ये सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी और तमिलनाडु की भी पूरी की पूरी राशि जैसे मैंने कहा वो रिलीज की जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। News now from the Rajya Sabha. Chairman Rajya Sabha Jagdeep Dhankar called for a meeting with floor leaders to discuss issues pertaining to Indian judiciary. In his remarks in the House before the meeting, the chairman expressed that there is no constitutional provision of review or appeal of a constitutional amendment. He further remarked that the issue concerned much beyond judicial mess. It concerned the sovereignty, supremacy and relevance of Parliament. Let us listen in. Honorable members, I had the benefit yesterday of the wise counsel, experienced counsel of Leader of the House and Leader of the Opposition, who were gracious enough to respond to my invitation for an interaction on this very critical issue that is agitating minds in all branches of governance. The issue undoubtedly is serious enough. We three of us together took note of the developments and also took note of the healthy development that for the first time in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from Leader of the Opposition and agreed by Leader of the House that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I am sure we will have very fruitful interaction and find a way out, because legislature and judiciary perform optimally when they perform best in their respective realm with expedition. I do not wish to be judgmental on any issue, but one thing which has found widespread acceptability in the country is that the entire material available with the Supreme Court has been shared with the people at large.
and constitution of a committee with that speed, I am sure things will be available to us. We will discuss when we meet leaders, floor leaders, that certain constraints have been generated by judicial orders on state actions. माननीय सदस्य, इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी. And that constitutional structure that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law, because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. For honorable members of Parliament, I seek your suggestions on one very important point. What emanated from Indian Parliament as a historic development with rare convergence of unity since independence, found acceptance by needed state legislatures. We need to reflect what happened to that. Under the Constitution, there is no provision that allows anyone to tinker with that. There is no constitutional provision of review or appeal of a constitutional amendment. If there is legislation in the country by Parliament or state, judicial review can take place on the anvil whether there is conformity with constitutional provisions. Now, before the nation, there are two situations. One, what emanated from the Indian Parliament, duly endorsed by state legislatures, sanctified by the Honorable President by appending signatures under Article 111. And second is a judicial order. Now we are at crossroads. I strongly urge members to reflect. There can be no breach by any institution of what emanated from the Parliament, endorsed by legislatures. And that should again, I reiterate, be the mechanism holding the field. It is time for us, having seen such extraordinarily painful scenario. I do not wish to go into the merits who is right or wrong. Innocence is something which we take at a very high level till someone is proven guilty. So members would think, and therefore the step taken by me, with the benefit of wise counsel and experience of leader of the opposition and leader of the House. And rarely there has been convergence that the ruling party president is leader of the House here and main opposition party president is leader of the opposition. So we will come back to the House on this very critical, important issue that concerns much beyond judicial mess. It concerns sovereignty of Parliament, supremacy of Parliament, and whether we are at all relevant. If we effect an amendment in the Constitution and that is not executable, if a constitutional amendment is not executable, I have no doubt the Parliament is possessed of the power, any power in any institution, to ensure what emanated from the Indian Parliament, sanctified by a requisite number of state legislatures, holds the field. Union Home Minister Amit Shah responded to the discussion on the Disaster Management Amendment Bill 2024. Shah emphasized that the bill's transformative provisions will significantly advance Prime Minister Narendra Modi's vision of building a disaster-resilient Bharat. By strengthening response forces, the legislation aims to better protect citizens from all forms of calamities. The bill emphasizes on a shift
from a reactive approach to a proactive strategy, ensuring the safety and security of every citizen. संशोधन के मूल कारणों की ओर जाना चाहता हूं। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैन्युअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं मान्यवर। और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, डिजास्टर रिस्पांस में क्षमता, तीव्रता, दक्षता और सटीकता, ये चारों को समाहित करने के लिए ये पूरा विधेयक बनाया गया है। और ये तो हम सब ने स्वीकारना पड़ेगा मान्यवर, 10 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल पावर बनकर उभरे हैं। ये पूरी दुनिया स्वीकार और भारत की ये सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये विधेयक है, इसके सामने रखना चाहता हूं। राहत केंद्रीय दृष्टिकोण के जगह समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की। रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच लिया गया और मिनिमम कैजुअलिटी का जो लक्ष्य पहले रखा जाता था, इसकी जगह जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य रखकर आपदा प्रबंधन करने की शुरुआत। मान्यवर, आज सरकारें केवल आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य को ही ध्यान नहीं रखती, प्री डिजास्टर कई सारी तैयारियां भी करी हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, यथासंभव प्रिवेंशन, मिटिगेशन, टाइमली प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और इसका ही परिणाम है कि 1999 में जब ओडिशा सुपर साइक्लोन आया तब 10,000 लोग मारे गए थे। 19 में चक्रवात फानी आया तब केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक आपदा मित्र योजना, इसके माध्यम से हमने 350 डिजास्टर प्रोन जिलों में 370 करोड़ से 1 लाख कम्युनिटी वॉलंटियर्स, उसका एक फोर्स बनाया और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल पर इन लोगों का रजिस्टर करा। तो जब भी आपदा आती है, ये ट्रेन स्वयं से भी अपने आप वहां पहुंचते भी हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी इनका पूरा लेखा जोखा रहता है मान्यवर। और मुझे बताते हुए आनंद होता है कि 1 लाख आपदा मित्र वॉलंटियर्स, जिसमें से 20% मातृशक्ति है, महिलाएं। मान्यवर, बहुत बड़ी बात, हमारी मातृशक्ति आपदा प्रबंधन के कार्य के अंदर कंधे से कंधा लगाकर जुड़ी है। और आपदा मित्र योजना का परिणाम क्या हुआ? 78,000 व्यक्तियों को बचाया गया, मतलब उनको अलग जगह पे ले जाए गए और 129 लोगों को जो दबे हुए पड़े थे, जिनको कोई करंट लग गया था, उनको समय पर अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाने का काम ये आपदा मित्र योजना ने हुआ है। कई सारे ऐप्स बनाए हैं, कुछ सदस्यों ने जिक्र किया है, फिर भी मैं बता देता हूं। मौसम जो IMD के लिए है, मेघदूत वो बारिश के लिए है, फ्लड वॉच बाढ़ की स्थिति के लिए है, दामिनी लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए है, पॉकेट भुवन जो वॉइस नेविगेशन का ऐप है, सचेत जो जियो टारगेटेड अलर्ट करता है, वन अग्नि जंगलों की आग के लिए है, समुद्र महासागर की जानकारी देता है, भूस्खलन अध्ययन की नोडल एजेंसी बनी है और इंडिया क्विक भूकंप के मापदंडों को ऑटोमेटेड प्रसारण करने का काम करता है। और मान्यवर, ये सारे ऐप
आज मोदी जी के कारण शायद ही देश का कोई नागरिक बचा होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, तो सबके पॉकेट में सारे ऐप पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोविड के प्रबंधन के लिए जिन लोगों ने टिप्पणियां की, मैं विश्वास के साथ उनको बताना चाहता हूं, पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन कहीं हुआ है तो हमारे भारत में। That's all we have in House Highlights for the day. Keep watching Sunset TV. Goodbye and good night.